रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। आस्क लेटर। चलें, ओके, वेलकम टू द सेकंड lecture of fuel and energy, and today's topic that I will focus on is solid fuels. The objectives from this topic of solid fuels are, at the end of this lecture, a student will be able to have an understanding of solid fuels. यानी ये पूरा lecture solid fuels पे based है। आप understand कर सकते हैं कि solid fuel क्या है। Different types of solid fuels आपको मालूम होने चाहिए। इसमें आपको सिर्फ you should know just one line or two lines about each type of solid fuel, because our focus is not on different types of solid fuels. Our focus is mainly on coal, which is one type of solid fuel. इस पूरे चैप्टर के अंदर the most important criteria that we'll focus on is coal. Another important solid fuel is biomass, but biomass will be treated as a separate CLO. When we do biomass later, we will focus on biomass. You should have a broad understanding of coal. यानी कोल के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी मैच्योरेशन कैसे होती है, द कंडीशन द कोल, एंड फाइनली इट्स ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। जो चीज़ें मैंने कवर की हैं, दैट इज ऑल यू नीड टू नो, बट यू कैन ऑलवेज लुक एट इंटरनेट सोर्सेज फॉर फर्दर रीडिंग. Just Google it out, it will help you. The more information, the better, because there are two types of answers I can ask. Majority of my answers are going to be conceptual questions, but I can ask you a question, discuss the generation of coal, just for example. So you have to go from the beginning to the end, and I can give you a 6-mark question on this. Just write the theory. So you should know how to formulate your answer, because later on in reports you need to write answer. I will not accept points for a big answer. You have to write a paragraph. So both types of questions are possible. Then you should be able to classify coal according to its properties and rank the coal from the best quality to the worst quality coal. There are different properties in coal. You should have the ability to find out which is the best coal, which is the second coal, which is the worst coal, the techniques. Lastly, you should be able to differentiate between the types of coal and conduct a coal analysis data. जो आपको I will give you different data. You should be able to use the techniques. There are two types of techniques. Using those techniques, you should be able to make an analysis on the coal, that what type of coal is this? Is this an anthracite coal? Is this a bituminous coal? Is this a lignite coal? Or is this a sub-bituminous coal? Yes, someone was asking me a question. पूछें? चलें. Moving on. Now focusing on the topic, as discussed yesterday in lecture 1, fuel is generally classified in 3 types: solid fuel, liquid fuel, gaseous fuels. Today's focus is on solid fuels. Okay, what do we understand by solid fuel? A solid fuel refers to various forms of solid material which can be burnt to release energy. यानी different amounts of solid material जो हम होते हैं उनको हम burn करते हैं to release energy. What do we burn it with? We burn it with oxygen. Release energy, again, as I mentioned to you, releasing energy means exothermic reaction. So whenever a fuel is burned, heat is always released, which we are using. I am linking it to yesterday's lecture. Through the process of combustion, the energy is used to provide heat and light. Do not forget that combustion will not only provide heat, combustion will always provide light also with it. That is why I used the word illumination yesterday. Common examples of solid fuels include wood, charcoal, peat, coal, corn, wheat, rye, grains, and animal dung. Okay, here you can see that there are two different words, peat and coal. I will repeat this point later.
If anyone asks you how many types of coal are there according to ranking, there are 4 types of coal. There are 4 types of coal. Even though in some books 5 types are written, peat is also written. Peat is not coal, but peat is the initial form of coal. यानी कोल आपका बन नहीं सकता जब तक आप peat से शुरू नहीं करो. तो peat is the initiation process for the production of coal. But do not make this mistake in the exam that there are 5 types of coal. Do not write that peat is coal. I repeat, peat is not coal. That is why peat is written separately. But when we come on to that process, I will guide you along. They have been greatly used in the past. Solid fuels have been greatly used in the past. They are still being used throughout the world. आज तक आपके solid fuels use हो रहे हैं. इसकी reason ये है, they are being used. I'll just give you a small example that they are cheap. They are readily available. I know many of you are from rural areas and villages. You must have seen this yourself. आपके घर में क्या हो रहा होता है? घरों के पास गांव, जो छोटे छोटे गांव हैं, कभी आपने देखा है जो वो फायर बर्न करते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं, किस चीज से बर्न करते हैं? लकड़ियां यूज करते हैं. आपके पास जो गाय भैंसे हैं, एनिमल मैन्योर यूज करते हैं यूज, नहीं करते हैं यूज? जी करते हैं ना. एनिमल यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? रेडिली अवेलेबल है. इट इज रेडिली अवेलेबल, इट इज चीप. सो दैट इज वन मेजर एडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल. चलें, नाउ आई एम कमिंग ऑन द कैटेगरीज ऑफ सॉलिड फ्यूल. सबसे पहले हम वुड फ्यूल की बात करते हैं. So you should just know 2 or 3 lines and some examples of this. Wood fuel can refer to several fuels. जब आप wood की बात करते हो तो wood के अंदर several type of fuels हो सकता है. Firewood हो सकता है जिससे आप आग जलाते हो, firewood जो normal होता है. Charcoal भी wood की कैटेगरी में आ जाता है. Wood के chips बन जा सकते हैं, pellets बन सकते हैं, sawdust बन सकती है. Sawdust क्या होती है? Sawdust is जब आपका कारपेंटर काम करता है, आरी चलाता है, तो पाउडर जो बनता है ना, वो sawdust होती है. So that can be used as, that is part of a wood fuel also. In most areas it is most easily available. Wood is very available. It does not require tools to pick. You don't need expensive tools to cut wood and all. Yes, you need the main tool. You need a saw, you need an axe, but you don't need different types of tools. Today, burning of wood is the largest use of energy derived from solid fuel biomass. We will talk about biomass later, but today the wood is the largest use of energy and it is derived from biomass. The term biomass means living material, and wood is a living material. That is why it falls under the category of biomass. Wood can be used for cooking, heating, occasionally used in steam engines and turbines. It can also be used in fireplace, campfires, bonfires, and is usually considered as a renewable solid fuel. Biomass. Biomass will be a separate category. Like I said, it will be considered in one of the CLOs, CLO4. But just for a general introduction, although wood is a form of biomass, the general term biomass refers to other natural plant materials which can be used as fuel. Common biomass fuels include waste wheat, यानी आपके गंदम का जो waste होता है उससे biomass बनाते हो, straw, nutshells, and other fibrous materials. Then we come on to coke. Coke is a fuel with few impurities and high carbon content. कल मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर और जब कोल प्रोडक्शन होता है तो एक चीज होती है जिसको हम कोक बोलते हैं. When you study PRE, petroleum refinery engineering, you will go more in depth of this. So my focus will not be on coke. But basically what is coke? It is made from coal and it has a high carbon content. That means that the heavier your molecule, the more coke it's going to content. More coke it's going to have. That is because the carbon content increases. So the lighter fractions like diesel, naphtha, they are C1s, they are C6, C7, they will not have coke. But something which is in the chain of C15, C16,
they have coke, because the carbon content is high. And not only is the carbon content high, they also have impurities. The major impurity in coke is sulfur, which is poisonous. That is why in the oil refinery you have to use processes like desulfurization. You have to remove the sulfur. So coke is basically a solid material which contains high amounts of carbon from destructive distillation of low ash, low sulfur bituminous coal. Important point: low ash, low sulfur bituminous coal. That means bituminous coal will have sulfur in it. So sulfur and other impurities come along with coke. Coke is made from coal and it is gray, hard, and porous. Petroleum coke is derived from the oil refinery, from coker units or other cracking processes. I will not go in the detail of coker units or cracking processes, otherwise you will not have anything in 7th semester. Smokeless fuels. That is another type of solid fuels which produce little smoke or volatiles. जो आपका smokeless fuel होता है ना, वो solid fuel होता है, उसके अंदर smoke बहुत कम होती है और volatile material बहुत कम होता है, यानी ये clean fuel होता है, इसलिए हम इसको prefer करते हैं. It is made from powdered anthracite coal. आपका जो anthracite coal होता है उसको powder कर कर smokeless coal बनता है, and they are used for domestic purposes in oven, fireplaces and stoves. इट इज रिप्लेसिंग कोल. आज के दौर में ये स्मोकलेस फ्यूल हम प्रिफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लेस पार्टिकुलेट. आपने पार्टिकुलेट मैटर पढ़ा होगा, पार्टिकल टेक्नोलॉजी. आपको मालूम है कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इसके. पार्टिकुलेट इमिशन एंड एन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी. स्मोकलेस फ्यूल की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. एफिशिएंसी किस तरह जज की जाती है ये भी मैंने आपको बताया है. एफिशिएंसी इज बेस्ड ऑन द क्लीनलीनेस, efficiency is based on the cost, efficiency is based on the heat. ये सारी चीजें कंबाइन होकर आपको एक efficient material मिलता है कि is this efficient or not. The most common example of a smokeless fuel is charcoal, which is a solid fuel and is used in barbecues. आप लोग जब अपनी बकरा ईद के बाद जाकर बारबेक्यू करते हैं तो आप लोग क्या डालते हैं अपने सॉलिड फ्यूल, क्या डालते हैं गोश्त बनाने के लिए? बारबेक्यू के लिए चारकोल ही यूज करते हैं ना जाकर. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. जाकर आप कोल, सॉलिड कोल यूज करें, सो यू आर गोइंग टू inhale the toxic matter. That is why preference is given towards charcoal. Advantages and disadvantages of solid fuels. If I ever ask you the advantages and disadvantages, जी कोई क्वेश्चन है? चलें. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जब हम सॉलिड फ्यूल की बात कर रहे हैं तो अभी मैं कोक के ऊपर प्रेजेंट नहीं हूं, कोल के ऊपर. दिस इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल द सॉलिड फ्यूल्स स्टार्टिंग फ्रॉम वुड एंडिंग टिल कोल, यानी सारों का कॉम्बिनेशन है. एडवांटेजेस आर easy handling and transportation. They are easy to handle and transport compared to liquid fuels. जब हम जाहिर सी बात है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देख रहे हैं, हम सॉलिड फ्यूल को लिक्विड और गैसियस फ्यूल से कंपेयर कर रहे हैं. दे आर चीप एंड इजीली अवेलेबल. कॉमन एग्जांपल वुड, काउ डंग एक्सेट्रा. मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. Yesterday I discussed that one of the properties of a good fuel is moderate ignition temperature. अगर आपका इग्निशन टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जहां पर फ्लेम हो जाएगी, इग्नाइट शुरू हो जाएगी, अगर बहुत कम होगा, इफ इट इज वेरी लेस, योर फ्यूल इज गोइंग टू कैच फायर वेरी फास्ट. एंड इफ इट इज वेरी हाई तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू गिर जाएगी. तो लेस भी अच्छा नहीं है, हाई भी अच्छा नहीं है. सॉलिड फ्यूल में मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता है. इट कैन बी स्टोर्ड इजीली विदाउट एनी रिस्क. डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं? ड्यूरिंग बर्निंग लार्ज अमाउंट ऑफ एश इज प्रोड्यूस एंड हार्ड टू डिस्पोज. फर्स्टली जब आप एश प्रोड्यूस करते हो तो एश प्रोड्यूस करने के अंदर उसका डिस्पोजल मुश्किल होता है, क्योंकि एश के अंदर अलग अपना टॉक्सिक मटेरियल होता है. अब एश को करोगे क्या? आप उसको क्या पानी में फेंक दोगे? वुड यू थ्रो इट इन वाटर? दैट इज harmful effect for the environment. You have to drink water, there are fisheries, etc. So it is hard to dispose ash.
especially because it's powder also. It can easily, if there's wind, it can flow away and it can damage the environment. Secondly, calorific value is comparatively lower. From yesterday, I am crying on this point that a good fuel is chosen based on its calorific value. Higher the calorific value, the better is the fuel. Solid fuel comparatively to liquid fuels as well as what we call gaseous fuel has a low calorific value. I showed you a chart yesterday. Based on that chart, you saw that coal was around 17,000, sorry, wood was around 17,000, etc. While hydrogen was 150,000 kilojoule per kg, and the petroleum, the liquid products were about 50,000, 60,000 range. Lot of air is required for complete combustion. Hence, they have a lower efficiency. If you use a lot of air comparatively to the liquid fuels and gaseous fuels, the efficiency is lower. Large space is needed for storage. It is not easy to store solid fuels. Because just take an example, if you're storing coal, you need a large room for it. But gases and liquids can easily be compressed in cylinders and in rooms. It is very easy to store them. Combustion is a slow process and can't be easily controlled. It's a very slow process and it is a process which cannot be easily controlled. So these were the advantages and disadvantages of solid fuels compared with liquid fuels and gaseous fuels. We will talk about liquid fuels and gaseous fuels in the coming lectures. चलें सर जी सर ये जो बोलें आपने पॉइंट पढ़ा डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट वाला ऐश प्रोडक्शन वाला, तो ये सर कल बोलें मैंने जब एडवांटेजेस पढ़े तो ये उस एडवांटेजेस में था कि ऐश कैन बी रीयूज्ड, तो ये डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है? देखें, हर चीज का यूज और रीयूज के अंदर एक वो होता है बात. अगर ऐश कैन बी रीयूज्ड, आप उसको रीयूज कर तो लेंगी, मगर एक पॉइंट के ऊपर ऐसा आएगा जहां पर ऐश से कुछ नहीं निकल सकता. उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगी? मेरा मतलब ये, अगर पहली दफा आपने यूज किया, आपने सारा कार्बन मटेरियल सब अपना यूज कर लिया, आपको ऐश मिला. जी सर। ऐश के अंदर आपने मजीद रीयूज कर फर्दर एनर्जी निकाल ली. उसके बाद कहीं पर तो अटक जाएगा ना, जहां पर आप फर्दर रीयूज नहीं कर सकते. अब क्या करेंगी? जी सर। ऐश, अब ऐश को डिस्पोज कैसे करेंगे? तो थोड़ा बहुत एडवांटेज है, मगर it is disadvantage. Again, I am comparing it with liquids and gases. Liquid और gases में ash नहीं produce होगी, तो इसीलिए ये disadvantages है compared to liquids and gases. और कोई सवाल यहाँ पर? ओके सर। चलें, अब this is the important point. Coal. Coal is the most important point of solid fuels. So please start paying attention now. I am starting from the origin of coal. Acha, before going on further, another form of an exam question is, I can give you diagrams like this. I can ask you to label diagrams, or I can ask you to label diagrams, or I can ask you to explain the diagrams. Any of these diagrams are possible. You don't have to draw them fully, but your concept should be clear. So these diagrams are based on concepts, and I will explain this concept to you also. Let's talk about coal. The origin of coal. It has been proved geologically that coal is of plant origin. Major difference between coal and petroleum products, including liquid and gases. Coal जो बनता है, that is made from fossils of plants, trees. It is not made from animal fossils or fish fossils. जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं और गैसियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इज मेड फ्रॉम बोथ एनिमल्स. एनिमल से भी हो सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, विच आर अ प्लांट स्पीसीज, और एनिमल स्पीसीज भी होते हैं. सो दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कोल एंड द अदर टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स. दैट कोल के अंदर अगर आपने एनिमल ओरिजिन लिख दिया, दैट मीन्स इट्स रबिश. यू डोंट नो योर कॉन्सेप्ट. Coal is only made from plant origin. In the original period of coal formation, look at this line, heavy vegetation in swamps. Heavy vegetation in swamps यानी आपके पास हर जगह plant origin था.
heavy vegetation in swamps built a thick layer. ये जो swamps के अंदर vegetation था, ये thick layer एक produce होती थी जो decay होती थी with vegetable residue. With time everything dies. Obviously when it's going to die, clear कोई नहीं करेगा, तो ये swamps के अंदर ही ये vegetation आपका वहां पर die होता था, तो वहीं गिरता था जाकर, residue form होता था. Swamp में होता क्या है? Swamp में पानी होता है. So this vegetation which died, this was soon covered with water. Water covered the decayed vegetation. Over a period of many centuries, an important point, coal जो बना है, that is made over millions of years. 10 साल की बात नहीं है, 100 साल की बात नहीं है, not a matter of thousands of years. It is a matter of millions of years. That is why coal is a non-renewable resource. आप आज अगर कोल को बोले कि मुझे कोल बनाना है, आपको कोल नहीं मिलेगा, millions of years गुजारने पड़ेंगे. So one of the important criteria of coal is time. You need time. I will tell you 3 major criteria which we'll talk about: temperature, pressure, time. These are the 3 major points which help in the formation of coal. So over a period of many centuries, यानी as time passed, ये जो decayed matter जो था ना, जो accumulate हुआ था water में to a depth of several feet, it was buried by floods, glaciers and other violent earth disasters. With time there were various earth disasters, flood होते, glaciers हुए थे, ये इसको accumulate करते रहते थे, तो ये सारा vegetation आपका beneath the earth buried होता रहता था. The decayed vegetation was subjected to extreme temperature and pressure. The word here is extreme. So if I ask you कि coal की conditions क्या हैं? High temperature, high pressure. अगर आप low temperature, low pressure करते हो, form ही नहीं हो सकता. The word is extreme. एक चीज होती है high, एक चीज होती है extreme. The pressure has to be high, the temperature has to be high. Geologists believe that this secondary transformation, जो secondary transformation है, it must have lasted several 100,000 years. ये जो transformation हो रहा है, to transform the swaggy swamp decay into solid mineral known today as coal. This was just the general history of coal. Now I will make you understand the formation of coal. If you look at this diagram, you can see that there's swampy water over here because obviously the trees are near the water. With the passage of time, the trees are going to die. If you look on the right side, sea water is coming and there are winds and decay. These are natural disasters that are going to come, flood and all. Flood and all, these trees will die and they will start forming coal. अगर सबसे ऊपर देखें, it is written peat. Peat is written on the left hand side. Bottom side के ऊपर coal लिखा है. That is the first difference. That is exactly what I am telling you, that peat is not a form of coal. Peat is just the first stage of coal which helps in the formation of coal. Peat is not coal. अब जब आप peat से coal की तरफ जाते हो, coal is formed in phase 3. And the better the coal, I'll give you a general rule. The better the coal, the darker the color. नीचे जाकर देखें कि आपका जो कलर है that is black for bituminous and anthracites. If I ask you why is the color getting darker, that is because the number of carbons are increasing. The more carbon that you add, the heavier the molecule, the darker the color. अगर आप tar को देखें जिससे आप रोड बनाते हैं, उसका कलर क्या होता है? पिच ब्लैक होता है. कंपेयर दैट कलर विद गैसोलीन. गैसोलीन का क्या कलर होता है? गैसोलीन इन अदर वर्ड्स पेट्रोल. पेट्रोल का क्या कलर होता है? येलोइश, ग्रीनिश. तो जितना ज़्यादा आप कार्बन एटम्स ऐड करते हो, द मोर द कलर बिकम्स ब्लैक. But that is another situation. Now if you look at the same diagram, there are 3 phases which take place. Phase 1 is aerobic decay. यानी कोल फॉर्मेशन के अंदर 3 प्रोसेसेस होती हैं. पहली प्रोसेस होती है एरोबिक डिके. एरोबिक डिके मींस डिके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन.
Because this is on the surface, oxygen is going to be present. When you go down, when accumulation takes place and depth decreases, what happens as you go down below the surface? Oxygen is going to decrease. Oxygen will definitely decrease. So phase 2 of your coal process is under anaerobic conditions, meaning absence of oxygen. यानी जब पीट से पहला कोल जो फॉर्म करना होगा या वर्स्ट क्वालिटी कोल फॉर्म करने लगेगा, उसको हम लिग्नाइट बोलते हैं. लिग्नाइट इज द लीस्ट द वर्स्ट पॉसिबल टाइप ऑफ कोल. तो लिग्नाइट जो होता है वो जब फॉर्म होना शुरू होगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होगा. देन देयर इज डीप बरियल. विद डीप सर स्लाइड शो नहीं हो रही. नहीं हो रही? किसी और को भी शो नहीं हो रही? हो रही है सर. I think you have an हो रही है. सही है. The word over here is deep burial. If I ask you what do you understand by the word deep burial, या आपको क्या लगता है deep burial के बीच में क्या होगा? जी, रोल नंबर 3. टेम्परेचर प्रेशर क्या होंगे अगर कोई चीज आप डेप्थ में नीचे जाते रहो? सर एक्सट्रीम होते जाएंगे प्रेशर भी, और एक्सट्रीम होते रहेंगे. जितना आप नीचे जाते रहोगे आपका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और प्रेशर भी बढ़ता रहेगा. अगर डीप बरियल का क्या मतलब है? अगर एक एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, पाइल के ऊपर पाइल के ऊपर पाइल बना जा रहा है, तो फोर्स बढ़ नहीं रही है, फोर्स बढ़ती रहेगी क्योंकि प्रेशर आपका बढ़ता रहेगा. तो जितना नीचे आप जाते रहोगे उतना आपका प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, उतना ही आपका टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा. और जितना नीचे जाते रहोगे उतना आपका ऑक्सीजन कम होता रहेगा, उतनी आपकी कंडीशंस एनारोबिक होती रहेंगी. इसीलिए जो आपका बेस्ट क्वालिटी कोल होता है ना, एंथ्रेसाइट, उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट सबसे कम होता है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में ग्राफ में दिखाऊंगा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट लेटर. दैट इज वन फॉर्म ऑफ डायग्राम, which is this. Then the second type of diagram is the same thing, what I've already said, coal formation. You can see that peat is forming with time. There are 3 parameters which I said: heat, pressure, time. Heat means temperature, so refer to it as temperature. Temperature is an important parameter, pressure is an important parameter, time is the third important parameter. पीट के ऊपर क्या आता है? पीट इज द ट्रीज, ग्रासी मैटर. विद द पैसेज ऑफ टाइम, इफ यू लुक ऑन द राइट हैंड साइड, जो इंक्रीजिंग इन टाइम, लिग्नाइट आता है. फर्दर जब आप इंक्रीज करते हो तो आप गुड क्वालिटी कोल के ऊपर पहुंचते हो. लिग्नाइट, आई रिपीट, इज द टाइप ऑफ कोल, लीस्ट कैटेगरी, द वर्स्ट पॉसिबल टाइप ऑफ कोल. अगेन द पॉइंट विच आई एम्फेसाइज्ड ऑन बिफोर, यानी जो मैंने पॉइंट पहले बोला था कि जितने आप कार्बन बढ़ाते रहोगे उतना आपका कलर बेहतर होता रहेगा. तो लिग्नाइट जो आपका वर्स्ट पॉसिबल कोल है, उसके अंदर आपका कार्बन मटेरियल कम है. क्योंकि कार्बन आपका कम है, आपका कलर ब्राउन होगा लिग्नाइट का. कोल के अंदर कार्बन ज्यादा है तो उसका कलर क्या होगा? ब्लैकिश की तरह करीब जाएगा. तो अगर मैंने कभी आपसे लिग्नाइट या कोल के बारे में डिफरेंसेस पूछे, दैट इज वन मेजर डिफरेंस. उसका रीजन क्या है? द रीजन इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज वन रीजन. रीजन नंबर 2, लैक ऑफ ऑक्सीजन. रीजन नंबर 3, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज बीइंग यूज्ड. रीजन नंबर 4, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है लिग्नाइट में. लिग्नाइट का मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल ज्यादा होगा क्योंकि आप ऊपर जो कंडीशंस, दैट इज अनदर रीजन एग्जैक्टली. इस बात के ऊपर मैं आगे आ रहा था. Just 1 second please. Stages of coal formation. When we talk about stages of coal formation, again look at this. Peat is on one side. Peat is not a form of coal. After peat you have 4 categories of coal: lignite, subbituminous, bituminous and anthracite. Look at the 2 conditions: burial pressure, heat and time. 3 conditions are always going to be there. The peat is first going to be transformed into lignite, further into subbituminous, then bituminous, then anthracite.
So I mean, I can give you any of these diagrams, ask you to label or understand or explain the concept, or give you graphs or anything related with that. But this I will tell you, if you know your theory, you will be able to answer any. But the fuel and energy exam paper, I am telling you right now, the fuel and exam paper will not be straightforward that I ask you, explain this, explain this, explain this. No, I will give you graphs. I will make you open your mind. I will make you calculate. So you need practice, you need concepts. If you have those, you study regularly, you should have no problem in solving the paper. So please start from now. Okay, ranks of coal. Coal types. Again, I'm repeating, there are four major types of coal, which are lignite, subbituminous, bituminous, anthracite. In this diagram, I have written peat, but peat is not a type of coal, but coal cannot be formed if there is no peat present. यानी एंथ्रासाइट आपको मिल नहीं सकता जब तक आपके पास इनिशियली पीट नहीं हो. मगर ये गलती नहीं कीजिएगा बोलने के लिए that peat is a form of coal. Peat is a type of coal. It is not. Now we come on to the coal types. Different coal types are all minerals and rocks made largely of carbon. Major component coal में क्या होता है? Carbon. This fossil fuel generates approximately 40% of the world's electricity and nearly about 25% of the world's primary energy. Not all coal used is the same. कहीं पर एंथ्रासाइट यूज होता है, कहीं पर बिटुमिनस यूज होता है, कहीं पर कुछ मसला होता है, तो सारा कोल सेम यूज नहीं हो सकता हर जगह. Coal comes in different quantity levels of carbon. What determines the, if I ask you what determines, एक second, if I ask you what determines the what you call quality of the coal, the major component which will determine the quality of coal is the carbon. Yes, पूछें. सर प्राइमरी एनर्जी क्या होती है? प्राइमरी एनर्जी क्या होती है? देखें, दो टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं. एक आपकी मेन जो एनर्जी होगी, जो हीट एनर्जी है, ये प्राइमरी एनर्जी है. सही है, जस्ट अ जनरल एग्जांपल. अब आप इस एनर्जी को अगर कन्वर्ट कर कर दूसरी टाइप्स ऑफ एनर्जी निकालें, फॉर एग्जांपल जियोथर्मल निकालें या विंड एनर्जी निकालें या सोलर एनर्जी निकालें, दैट गोज इनटू सेकेंडरी एनर्जी. समझ आई? ओके. The amount of carbon will dictate the quality of the coal. Higher the quality of coal, higher quality of coal produces less smoke. यानी जितनी अच्छा आपका क्वालिटी हो कोल का, उतना आपके लिए स्मोक कम होगा. It will burn longer and provide more energy compared to lower quantity coal. That means एंथ्रासाइट का एग्जाम्पल ले लें. अगर एंथ्रासाइट है, उसकी क्वालिटी हाईएस्ट है, उसके अंदर कार्बन सबसे ज्यादा होंगे, उसके अंदर स्मोक सबसे कम प्रोड्यूस होगी. इट विल बर्न लॉन्गर, इट विल प्रोवाइड मोर एनर्जी कंपेयर्ड टू लोअर क्वालिटी कोल. व्हाट डू यू मीन बाय मोर एनर्जी? मोर एनर्जी वुड मीन दैट द calorific value of anthracite coal is going to be much higher than a lower quality coal. Okay. Suppose if I give you this table, it is not very difficult to understand this table. Or if I ask you questions regarding this table, based on this table, you can see that anthracite, bituminous, subbituminous, lignite, four main types of coal. There is also peat. If you look at the carbon content, I told you that carbon content is what determines the quality of coal. Starting from anthracite, carbon content is about 86%, 86 to 92. कार्बन कंटेंट अगर ज्यादा है, आखिरी कॉलम देखें, हीट कंटेंट, दैट इज कैलोरिफिक वैल्यू, मेगा जूल्स पर केजी. दैट इज आल्सो यूनिट ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू बिकॉज किलो जूल पर केजी भी हो सकता है, मेगा जूल पर केजी भी हो सकता है. 32.33 है. बिटुमिनस कोल देखें, लोअर क्वालिटी कोल है बिकॉज कार्बन कंटेंट थोड़ा सा लो है, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कम है. सब बिटुमिनस की और कम है, लिग्नाइट की और कम है. Simultaneously, if the carbon content is going to be higher, the moisture content is going to be low, the volatile content is going to be low.
Why is that? I told you right at the beginning, there are two types of phases which are acting on the coal, processes. Phase 1 is aerobic, phase 2 is anaerobic. The lesser you go, anthracite is found right at the depth. The lower you go, the lack of oxygen is present. यानी ऑक्सीजन कम होता रहता है, पानी भी आपका कम होता रहेगा. जितना भी इवेपोरेशन टेम्परेचर, जितना भी मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करेगा वो ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट करेगा, विल एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द टॉप. Hence, the good quality coals are going to have less moisture and less volatility compared to the bad quality coal. You can also relate it to yesterday's lecture. कल मैंने आपसे बात की थी that a good fuel will have a high calorific value but low moisture content. अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एंथ्रासाइट गुड क्वालिटी है क्योंकि उसका हीट कंटेंट कैलोरिफिक वैल्यू हाई है 32 मेगाजूल, that will automatically it should have a low moisture content. So these two things go parallel hand in hand. ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कैलोरिफिक वैल्यू भी सबसे हाई है और मॉइस्चर कंटेंट भी सबसे हाई है. So these are used, this is in relation with yesterday's lecture, that fuel content is low, moisture content is low for a good quality fuel. Now if I give you this table, and in a table, because I have this habit of making you extract information, I can give you this table and say A, D, E, F, G and give you these values. My first part of my question, identify A, D, E, F, G. So based on these data, you have to explain why you identified A, D, B, F, G. There must be a reason for identifying that. You're going to say, okay, fine, A is anthracite coal. How do I know? Number of carbon content is greater. That is the biggest clue. Second clue, the calorific value is great. बात समझ आ रही है? Because मैं आपको dodge देने के लिए, to give you a dodge, I can even do this. A, फर्ज करें पहले दो कॉलम देखें, anthracite and bituminous. I write coal is A, second I write B. Dry carbon content both के 86, because उसकी range 86 to 92 है, ये 76 से 86 है, they overlap together. If both of them are 86, and I asked you to identify, how can you identify that whether it is anthracite, whether it is a bituminous coal? Then you will look at the second column. Second column, this will clearly tell you that the calorific value is 32.3233. The calorific value is 2333 roughly, which obviously means that the higher calorific value would be anthracite, because sometimes the number of carbon atoms, they overlap with each other. आप उनको differentiate नहीं कर सकते. तो बात समझ आई कि टेबल को देखकर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे पास कौन सा टाइप ऑफ कोल है. जी, बात समझ आई? कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. चलें. Okay, another thing that I can give you is this graph. You have to understand this graph, the progressive changes which take place during coalification process. I can ask you to make this graph, I can ask you to label this graph, I can remove these bottom parts, wood, peat, lignite, subbituminous, bituminous, semi-anthracite, anthracite. You don't need to go on semi-anthracite, anthracite. You just need to know anthracite, bituminous, subbituminous, lignite, peat. If I give you this diagram and ask you to label it, it is very obvious. Hydrogen is going to be the one which is more or less constant, because the process is not affecting hydrogen. तो हाइड्रोजन की जो लाइन है वो more or less straight है from wood से लेकर anthracite तक. Let's talk about carbon. Carbon is going to increase. Why will it increase? Because calorific value is going to increase. So from wood till all the way towards anthracite, the carbon is going to increase, because that is what we are saying till now, that calorific value is based upon the number of carbon atoms, and anthracite has the greatest number of carbon atoms compared to lignite, for instance. Similarly, oxygen is going to decrease. One reason you know is, okay, we'll come to oxygen later. Let's talk about volatile matter. Volatile matter is also decreasing.
Why is volatile matter decreasing? Because again, volatile matter is related to calorific value. Yeah, it is inversely proportional. If the calorific value is increasing, the volatile matter has to be less. Calorific value is increasing because number of carbon are increasing. So automatically, if number of carbon increases, number of volatile matter is going to decrease. And volatile matter was also related to moisture. I already told you that a good fuel will have a high calorific value and less moisture. So if you remove the moisture, what is moisture? Water. Water is moisture. If you remove the moisture, what is happening indirectly? You are removing oxygen. You are removing oxygen. So when you go towards anthracite, oxygen is going to decrease. That is one reason. One reason you can give why oxygen is decreasing. Second reason what you can give for oxygen is decreasing. Simple reason, at the surface there is aerobic oxidation. At the bottom there is anaerobic oxidation because jitna aap niche aayenge to the surface, the lower you go to the surface, the less oxygen you're going to be present over there. Obviously, under anaerobic conditions, the oxygen is going to decrease and anthracite is right at the bottom. So anthracite would have the least amount of oxygen. So it is very easy to label this kind of graph or explain this graph. If I give you this graph and I ask, discuss what this graph is signifying, something like that. The figure shows progressive changes during qualification process from wood to anthracite. Discuss your conclusions from the graph or conclude what you observe from the graph or label the graph. You know how I give questions. For example, in your heat transfer paper, I gave you one question where I gave you a graph and I asked you what this graph is showing. So you should know how to read this graph. तो ये ग्राफ समझ आ गया? समझ आ गया कि आप ऑक्सीजन को किस तरह डिफेंड कर सकते हैं कि कम क्यों आ रहा है, वोलेटाइल मैटर को किस तरह डिफेंड कर सकते हैं, कार्बन को किस तरह डिफेंड कर सकते हैं. लिंक कार्बन एंड कैलोरीफिक वैल्यू, लिंक वोलेटाइल मैटर एंड Sir, कैलोरीफिक वैल्यू. एक सेकेंड. लिंक ऑक्सीजन एंड कैलोरीफिक वैल्यू. Also link oxygen to aerobic oxidation and anaerobic oxidation. That aerobic oxidation is going to be on the top, anaerobic oxidation would be at the bottom, anthracite is at the bottom, hence least oxygen there. बोलें. सर ये जो कार्बन वाली लाइन है इसको बता देंगे दोबारा से. देखें, कार्बन की लाइन में मैंने यही बोला है कि जो मैं अभी तक बोलते आया हूं कि द ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द बेटर द कोल इज प्रोड्यूस्ड, बिकॉज जितने कार्बन आप ज्यादा करेंगे उतना आपका कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज होगा. वुड के अंदर कार्बन एटम्स कम होते हैं, इट इज नॉट गुड क्वालिटी. बट व्हेन यू कम ऑन टू लिग्नाइट, लिग्नाइट पे देखें रफली 62 कार्बन है. Anthracite के ऊपर you're getting 86, roughly 86, 90 carbon. It is above 90. It is about 92, 93. क्योंकि anthracite की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है और जितना नीचे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जाते रहते हो उतना उसके अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ता रहता है. और ये जो मैंने आपको वर्बली बताया है वो आपको यहाँ भी नजर आ रहा है. एंथ्रासाइट को देखें, फर्स्ट कॉलम 86 to 92. उल्टा चलें, लिग्नाइट की साइड से चलें. लिग्नाइट 65 to 70, सब बिटुमिनस 70 to 76, बिटुमिनस 76 to 86, anthracite 86 to 92. Similarly, its calorific value is increasing. Whatever is written in this table is reciprocated in this graph. मतलब ये ग्राफ भी आपको वही चीज बोल रहा है कि कार्बन इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज कर रही है. फर्स्ट पॉइंट, कार्बन इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि उसकी क्वालिटी एक इंक्रीज हो रही है. जितनी कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज होगी उतनी उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी. क्लियर हुआ? यस सर. Okay, then we come on to classification of solid fuels and its calorific value. This is the same information based on another dimension. आपको आपके fuels दिए हुए हैं. I will not go on to this because this is self-explanatory. Fuel आपको दिए हुए हैं, उसका फिर nature दिया हुआ है. By nature, you know its qualities and its color, etc. That higher it is brown in color, lower it is black in color. Again, the calorific value.
Look at the peat's calorific value, compare it to anthracite. Composition. Composition may observe the fact that hydrogen is 6, hydrogen is 5, hydrogen is 5, hydrogen is 5, hydrogen is 3. Carbon is 57, carbon is 67, increasing 77, 83, 93. Oxygen is decreasing. That is exactly what you see over here. Carbon increasing, oxygen decreasing, hydrogen more or less constant. And uses you can easily find out. Okay, we are going to have a 2-minute break because Sir? I want to put 1 second.